Bismillahirrahmanirrahim. In the first session, we discussed some problems about whether a given function is continuous at an indicated point, is derivable at an indicated point, and additionally, we considered the continuity of the derivative itself. In the next part of this lecture, which I have not shared yet on the LMS, but I will share it soon. Derivative 2 file, which includes a number of questions that we have just discussed and not discussed, solved. But back to where we left the previous session. We had to start a study of increasing and decreasing functions. When we consider whether a function is increasing or decreasing in a small interval or over a large interval, what we consider is that the values of the function over the interval from left to right are having larger and larger values, then the function is increasing. And if over the neighborhood c minus delta to c plus delta going from left to right, if the function values are decreasing, having smaller and smaller values, then the function is said to be decreasing. There is a variety of terms: monotonic increasing, steadily increasing, monotonic increasing, steadily increasing, strictly increasing, but I am considering only the term increasing, and that is in fact strictly increasing. That is going from left to right. The function value keep on rising, and there is no possibility of function becoming constant within the interval. So if I have considered a function over an interval AB, closed interval, and I say that the function is increasing, in definitions less than or equal, and on the left it is smaller, on the right it is greater, and there is a possibility of being equality for every x1 and x2 in the neighborhood, in the interval. So strictly, and this equality of a possibility of equality is gone. So generally, whenever I use term increasing or decreasing, I'll not be considering this unless and until I specifically mention. So increasing will mean strictly increasing, and decreasing means strictly decreasing. Of course, there are possibilities of this kind in many functions, like step function, bracket function, ceiling function, or floor function. But in generally algebraic functions, mostly we have a strictly increasing or a strictly decreasing situation. Now we note that if a function is derivable over an interval and increasing as well on the interval, then the derivative has to be at least 0. That means the function, if it is decreasing, derivable and increasing, derivability पहली शर्त है, और function increase भी कर रहा है, तो अब over the interval, the function's derivative values will be positive. A brief proof is given here that we consider that a function is increasing over the interval. That means in the neighborhood of any point in the interval AB,
C माइनस डेल्टा पे फंक्शन की सर ये वैल्यू, हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं ना? इस वक्त मैंने ओपन लिया है, जी ठीक है। इसलिए कि मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं कर सकता, और डिराइवेबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं होती एंड पॉइंट्स पे, इसलिए जी जी ओपन इंटरवल लिया है. ओके सर। So at any point, interior point of the interval AB, uh, mm, if we consider the neighborhood of point C as interior point, and we assume that the function is increasing over the interval, then and this is what we consider as being increasing function. Now, purposefully, due to a certain purpose, I have taken loose inequality, that is not a strict inequality. But one thing is clear, that if I look at this left-hand side, and from C minus delta to C, if I consider FC minus delta minus FC, चूंकि FC larger है, लिहाजा smaller function value से larger function value subtract करेंगे तो negative result possible है. लिहाजा इसको minus delta से अगर मैं divide कर दूँ, the number FC minus delta minus FC is negative or equal to 0. और माइनस डेल्टा से डिवाइड करूंगा तो माइनस नेगेटिव नंबर डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर, डेल्टा इटसेल्फ इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड किया तो ये रेशियो ग्रेटर देन 0 हो गई. एंड इफ आई अप्लाई लिमिट ऑन दिस as delta approaches 0, what I get is actually left-hand derivative at C. And since this holds valid close to C, then we say that this implies that the limit delta approaches 0 will be positive or at least 0. So left-hand derivative at C uh, is either positive or 0. Then if we consider the right side of the neighborhood, that is C to C plus delta, C पे function value चूंकि C left पे और C plus delta right पे है, so C plus delta पे image larger है, C पे image smaller है, so this FC plus delta minus FC will be positive. Dividing it by delta, that means I am constructing the right-hand derivative. So positive divided by positive will remain positive, and when apply limit, we conclude that right derivative at C is either positive or 0. Now, one says that the left-hand derivative is greater than or equal to 0, and right-hand derivative is also greater than or is equal to 0. Now, is there any conflict in the two results, 1 and 2? The conflict is that if I just look at 1 and 2, the derivative left side से और right side से दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन दोनों positive भी हो सकते हैं, और अगर दोनों positive हैं तो फिर different भी हो सकते हैं. But my hypothesis says that the function is derivable over every interior point in the interval. So if the function is derivable, the left derivative and the right derivative should be equal. Now, in view of 1 and 2, the equality is possible only when the derivative is what? 0. नहीं, 0 नहीं आएगा. यस, 0 भी हो सकता है, लेकिन दोनों साइड से चूंकि मुझे डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, तो मेरा असल कंक्लूजन ये है कि ये एग्जिस्ट करता है डेरिवेटिव, सो आई लीव आउट द लेफ्ट डेरिवेटिव and right derivative term and say that the derivative is positive or 0. So there is no conflict. Both results are supporting each other. Whether the derivative is 0 or not, the left and right are equal. So जो property left hand derivative और right hand derivative की होगी, वो property derivative की होगी, because function is derivable. So the function, in case the function is increasing over the interval, the derivative is positive or 0. Similarly, if we consider a function to be derivable and decreasing over the interval, we will conclude that in both that cases, we will get left and right derivative to be negative or 0.
So the derivative will be negative or 0. सर लेकिन हमें कैसे पता कि दोनों इक्वल है, मतलब दोनों की Hypothesis. वो आ गई है ना? Hypothesis कि function derivable है. ठीक है सर. ठीक है. So the two results are supporting each other. And चूंकि function derivable है, लिहाजा left और right दोनों derivative 0 होंगे. So derivative will remain positive or it will be at least 0. So overall conclusion हमारा ये है कि अगर एक interval पर function increasing है और derivable भी है, तो derivative over the interval will be in case of increasing will remain positive, in case of decreasing will remain negative. We note another important thing, that sign of derivative does not change suddenly. So we take f to be derivable and say that derivative is strictly positive. अब हमने इंटीरियर पॉइंट पे डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ले लिया, और चूंकि डेरिवेबल है लिहाजा लेफ्ट और राइट कैसे भी हम कैलकुलेट करें हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो एफ प्राइम सी होगा. Now if I consider x is not equal to c, that means c से मैं जरा सा हट जाऊं. So what will be the difference between this incremental ratio and the value of the derivative? It will not be very large. It will be small. Whenever x minus c are very close to each other, but x is not equal to c. इसका मतलब ये हुआ एक आम जनरल रिजल्ट जो है, लेट मी शेयर दैट आल्सो विद यू, दैट if I have limit x approaches some number a of fx is equal to some number capital A. तो अगर मैं वैल्यूज क्लोज टू ए कंसिडर करूं, यानी एक x माइनस ए लेस देन डेल्टा और पॉजिटिव, then the difference of function values and the limit, that will be small, which is the basic idea of the limit, right? Now जो हमने बेसिक डेफिनेशन ली लिमिट की वो ये है कि अगर a इसकी लिमिट है तो fx minus a mod is less than a small number whenever x is very close to delta. So this from here to here we have written everything in view of the basic definition of limit. Now this can be broken down into what? Derivative value minus epsilon and derivative value plus epsilon. It's these two numbers sandwich this increment ratio fx minus fc divided by x minus c. अच्छा जी, अब अगर मैं एप्सिलॉन को, क्योंकि एप्सिलॉन इज अ फ्री चॉइस, डेरिवेटिव वैल्यू से कम ले लूँ एप्सिलॉन को, इसका मतलब होगा कि डेरिवेटिव वैल्यू लार्जर है तो माइनस एप्सिलॉन इज पॉजिटिव. इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन खुद पॉजिटिव है और एफ प्राइम जो है वो उससे बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा. चुनाचे एफ प्राइम सी प्लस एप्सिलॉन इज ऑल्सो पॉजिटिव. और चूंकि मेरे पास डेरिवेटिव इन दी हाइपोथेसिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये जो इंक्रीमेंट रेशियो है, ये नंबर भी पॉजिटिव आ गया और ये नंबर भी पॉजिटिव आ गया. दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान सैंडविच है, तो ये इंक्रीमेंट रेशियो रिमेन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स. ये नोटेशन रो बंद करना पड़ेगा मुझे क्या? So we reach the result that under what hypothesis function is derivable and derivative positive. हम यहाँ पहुँचे that this holds, यानी ये incremental ratio positive है whenever x belongs to this neighborhood. अच्छा जी, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे x ले लूँ तो fc minus delta minus fc divided by minus delta is positive. And that means what? अगर ये पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा.
so that the overall number is positive. So FC minus delta minus FC is negative. इसका मतलब FC minus delta is less than FC. And that is an indication of what? Left पे function value is smaller, right पे function value is larger. और अगर right side of the neighborhood पे consider करूँ यानी C to C plus delta, FC plus delta minus FC divided by C plus delta minus C, and I again see that FC plus delta minus FC has to be positive. That means FC plus delta is positive. So A और B मिलके मुझे बता रहे हैं कि over the neighborhood C minus delta to C plus delta, function value is smallest on the C minus delta end and largest on the C plus delta end. इसका मतलब है if the derivative positive, the function is increasing. If the derivative is positive, the function is increasing over the neighborhood, and if derivative is going to be negative, then the function will be decreasing, and that can also be demonstrated like we have demonstrated here. Now, some problems related to function being increasing or decreasing. Look at this. Show that log 1 plus x lies between these two functions. That means हमें ये show करना है. To show this, what we do? Let me go to the white board. We have to show that x minus x square upon 2 is less than अच्छा इन प्रॉब्लम में जहाँ LOG लिखा है that means ln is less than x minus x square upon 2 times 1 plus x. The next exercise is about similar questions and interesting results are obtained. Now to prove that this happens, we make two functions. One is fx made from ln 1 plus x minus x minus x square upon 2 plus हो जाएगा this minus this. एक और फंक्शन बनाता हूँ gx और उसमें x minus x square upon 2 times 1 plus x minus ln x ln 1 plus x. मुझे ये शो करना है कि values of this function are smaller than this. मैंने जब ये फंक्शन बनाया larger values minus smaller values, तो ये positive होना चाहिए. This has to be positive. So is it really positive? Will be decided by the derivative. अच्छा जी. So decided by the derivative, so I write down the derivative. ln का derivative, x का derivative, x square upon 2 का derivative. अच्छा जी. I take the LCM, 1 plus x, 1 minus 1 plus minus 1 multiplied by 1 plus x. अच्छा साहब क्या सूरत हाल है? ये तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे सूरत हाल. सर न्यूमरेटर में होगा 1 minus 1 minus x plus x square. x square भी आएगा इनमें सर. minus x plus x plus x square. Plus x plus x square. Very good. Yes sir. यानी चाय पीने के बावजूद भी मेरे दिमाग से गाने नहीं आया. So x cancel out, 1 cancel out, everything cancel out.
Now what does this mean? This is the derivative. सर x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है. And if I consider x to be positive, this number is going to be positive always. क्योंकि सवाल मैंने पूरा पढ़ा नहीं था. Yes. सवाल ये था कि वो under the condition that x is positive, तो derivative has come out to be positive. इसका मतलब है ये फंक्शन जो मैंने बनाया था ये इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग होने का मतलब है ये सूरत हाल है. जरा देखें फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है. What's the value of the function at 0? ln of 1 plus 0 minus 0 plus 0. ठीक है सर 0 ही हो जाएगी. अच्छा. As fx is increasing, ये मैं बनाऊंगा निशान इंक्रीजिंग के लिए, अपवर्ड एरो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है. सो व्हाट कैन आई से अबाउट द फंक्शन वैल्यूज? पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव होंगी? सर पॉजिटिव होंगी. तो फंक्शन क्या था? फंक्शन ये था. सो दिस मीन्स ln of 1 plus x minus x plus x square by 2 is positive. So we have answered this question. This is positive. इसका मतलब ये है कि x minus x square upon 2 is less than ln of 1 plus x. So सर ये this जो f part प्राइम x हमने निकाला जी ये हमने सिर्फ इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए निकाला ना. ये देखने के लिए निकाला कि डेरिवेटिव का साइन क्या है फॉर x ग्रेटर देन 0. मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है ये प्रूफ करने के लिए निकाला ना. और फिर हमें पता चला कि इंक्रीजिंग है इसलिए वो पॉजिटिव होगा. Let me put the sequence of thought. मुझे इस फंक्शन को देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं फॉर ऑल x. ये देखना है मैंने. फॉर ऑल पॉजिटिव x क्या ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है? और ये फंक्शन कहाँ से बनाया? दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन. अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. ठीक है. फंक्शन के इस बिहेवियर को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने डेरिवेटिव निकाला. फिर देखा कि ये डेरिवेटिव जो मेरे पास आया है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, इसका साइन क्या होगा? न्यूमरेटर तो स्क्वायर है, वो तो पॉजिटिव ही होगा. डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन x पॉजिटिव है, लिहाजा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा. सो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x. अच्छा, अब इससे ये तो आ गया कि f इज इंक्रीजिंग फॉर ईच x ग्रेटर देन 0. मगर ये नहीं आया कि फंक्शन पॉजिटिव भी है कि नहीं है. भाई इंक्रीजिंग फंक्शन नेगेटिव भी तो हो सकता है ना. तो उसके लिए हमने चेक किया कि हम x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखें क्या है. अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पे आ गई 0 और अदरवाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो जब इंक्रीज करेगा तो 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी ना. जब 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी तो वो सब पॉजिटिव होंगी. So that proves that the function that we made is positive. So this function is positive for all x greater than 0. और इसको फिर उस ओरिजिनल इनइक्वालिटी फॉर्म में लाके लिख दिया हमने. So x minus x square upon 2 is less than ln x for each x positive. So can you analyze this function yourself? थोड़ा सा डेरिवेटिव लंबा चौड़ा होगा. चलो पहला सवाल लिया कर देता हूँ मैं. ये दूसरा फंक्शन कहाँ से बनाया हमने? This larger part minus this smaller part. हमें ये चाहिए क्या? This should also be positive. This is our question. So we work out the derivative. 1 minus. अब ये 1/2 अलग किया और u upon v लगाया. 1 plus x whole square 1 plus x into 2x minus x square into 1.
ये एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, -1 अपॉन 1 + x. So I can take LCM 2 times 1 plus x whole square. So 1 into this is 2 times 1 plus x square minus 2x square. तो ये टर्म एज इट इज आएंगी नेगेटिव साइन के साथ. तो पहली आएगी -2x, दूसरी आएगी -2x स्क्वायर, तीसरी आएगी +x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x कैंसिल होके 2 times 1 plus x. So what's the numerator? डिनोमिनेटर तो हमारा पॉजिटिव है. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, 2 और 2 कैंसिल हो गया. दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसिल आउट. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गई. x स्क्वायर की टर्म बच रही है, -2x -2x -4x. Anything else remaining? सर ये जो आपने फर्स्ट टर्म लिखी है, ये आपने 1 + x स्क्वायर क्यों लिख दी? 1 + x होल स्क्वायर है ना, उसकी वजह से चेंज आएगा सर. हमें पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा. बच गए. It will be 2 plus 4x plus 2x square minus 2x minus 2x square plus x square minus 2 minus 2x whole divided by 2 times 1 plus x whole square. So 2x square minus 2x square cancel out. 4x minus 4x cancel out. 2 and 2 cancel out. क्या बचा? सिर्फ x स्क्वायर बचा upon 2 times 1 plus x square, which is definitely positive for all x. Not only for positive x, but for all x. जो इसका मतलब ये हुआ कि g is increasing for all x. So what is the value of g at 0? इसमें 0 रख के देखें. 0 minus 0 divided by 2 plus 0 minus ln of 1 plus 0. This comes out to be 0. इसका मतलब for each x greater than 0, g of x will be greater than 0, and that makes this function to be positive for all x greater than 0. That means we have arrived at the conclusion that log of 1 plus x is less than x minus x square upon 2 times 1 plus x for all x positive. So 1 and 2 together makes this result that this is true for all x greater than 0. तो इस तरह के सवालात जो हैं वो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे. And some I have discussed. This I have discussed in detail. I hope it's all clear. मैं overall जो विजन है क्वेश्चन का उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ. ये इस्टेब्लिश कर चुका था मैं, अब मुझे ये इस्टेब्लिश करना है. इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, this minus this. So this function minus this function is required to be positive, क्योंकि ये फंक्शन इससे बड़ा है, यानी इसकी फंक्शन वैल्यूज इस फंक्शन वैल्यू से बड़ी हैं. सो gx हैज टू बी पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट्स. तो g का डेरिवेटिव निकाला और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि g का डेरिवेटिव जो है ये तो थ्रू आउट पॉजिटिव है. इसका मतलब g जो है वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है. जब g थ्रू आउट इंक्रीजिंग है तो लेट अस सी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ g एट 0. दैट कम्स आउट टू बी 0. क्योंकि g इंक्रीजिंग है
So if I consider x values greater than 0, then gx must be greater than 0, and that proves this part of inequality. So making one function, we proved one part of the inequality valid. Making the second function, we proved the second part of the inequality valid. So I hope you understand this logic. So ये जो मैंने काट पीट की भी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी. Anyways, I hope you understand this. Let us move on to the next part. मेरा ख्याल ये अभी मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए थे ना, आपने रूट एक्स वाला मुझसे करवाया था, और मैंने कहा था ई पावर एक्स में क्या इश्यूज आएंगे, वो सारे यहाँ डिस्कस किए हुए, डिस्कस नहीं किए मैं, सॉल्व किए हुए. फिर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन को मैंने डिस्कस किया हुआ है. आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. एक्स क्यूब वाला प्रॉब्लम भी यहाँ डिस्कस हुआ हुआ है. एक्स माइनस ए इंटू साइन वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए भी डिस्कस हुआ हुआ है. आई होप यू विल अप्रिशिएट दैट. And then another example for inequalities. ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली inequalities of functions से मुताल्लिक़ है, और inequalities of functions जो है उनको establish करते हैं हम derivatives के ज़रिए. यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, और डेरिवेटिव निकालने के बाद को सिंप्लीफाई किया और देखा कि एक कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है. बट अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के बारे में गौर करें, जिस इनइक्वालिटी को मैं यूं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 4x विच इज वैलिड फॉर एवरी x, इसका मतलब है डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. जिसको मैं चाहूं तो इस तरह से भी कर सकता हूं. ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बन जाता है कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1. सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. तो ये एक्सप्रेशन जो है, जो कि डेरिवेटिव है fx का मल्टीप्लाइड बाई 3, ये एक्सप्रेशन जो है x की वैल्यू कुछ भी हो, चूंकि x माइनस 2 होल स्क्वायर हो रहा है, लिहाजा ये सब पॉजिटिव होगा. तो इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि हाँ भाई डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर एवरी x. इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है, दिस इंप्लाइज f इज इंक्रीजिंग. जब f इंक्रीजिंग है, सो दिस फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन जिसको हमने ग्रेटर देन 0 साबित करना था, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो एक स्टेप यहाँ रह गया हुआ है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0 0 0 3, और x इक्वल टू 0 के बाद से डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लिहाजा फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी. 0 भी पॉजिटिव है, उससे आगे भी पॉजिटिव रहेंगी. अल्टरनेट डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. Another problem of the type that we considered, I hope you will be able to understand these solved problems. हाँ, ये बता दूं कि कभी कभी हमारे सामने डेरिवेटिव्स ऐसे मज़ेदार आ जाते हैं कि जिनके साइन के बारे में फैसला करना मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया क्या, fx, उसका डेरिवेटिव तो बहुत आराम से पॉजिटिव आ गया. fx बनाया था किस पार्ट को लेके, ये में मिसिंग है, यहाँ पे fx कंप्लीट नहीं लिखा हुआ. fx शुड बी दिस माइनस ln. नहीं, कुछ और किया हुआ मैंने. छोड़ो यार, इसको छोड़ो.
यहाँ भी गड़बड़ हुई हुई है. This is a problem on page 194, and I reconsider this on the whiteboard. Let me first copy the question. X upon 1 plus x is less than ln 1 plus x is less than x. So अगर मैं बिल्कुल वैसे ही करूं जैसे मैंने पहले किया था, तो ln को मैं एक पहले फंक्शन को ln 1 plus x minus x upon 1 plus x consider कर लेता हूं. And this is has to be proven to for all x positive. Yes, for all x positive. So derivative लेंगे तो 1 upon x 1 plus x minus 1 plus x squared 1 plus x into 1 minus x into 1, which simplifies to what? 1 plus x square 1 plus x minus 1 minus x plus x. So what we have is a very simple situation, which is definitely positive for all x. X positive or negative or square होने के बाद, इसका मतलब है f is increasing for all x. So what is f0? Now f is increasing for all x doesn't mean that f is positive for all x. Okay, I could have a negative result, which is something like this. A negative value functions negative like this. It is increasing, but all value is negative. मुझे ये prove करना है कि इस function की सारी values positive हैं. So f0 check करना जरूरी है. ln 1 plus 0 minus 0 upon 1 plus 0. So that is 0. And that means कि अब कह सकता हूँ मैं फंक्शन पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से बड़ा है और इंक्रीजिंग है. फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 पे 0 है, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड x इज ग्रेटर देन 0. Similarly, for the second function, I consider x minus ln 1 plus x and explore it yourself. Okay, ठीक है? I hope you can do that. Following similar steps, you will be able to do that. So, इस सबको भूल जाना, वो जो डिस्कस किया है मैंने वो करना. ये एग्जाम्पल है अनदर. मैंने मेथड डिस्कस कर लिया. It's only the evaluation of derivative and adjustment and exploring the sign of the derivative. ये यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है कि tan inverse x is less than x. ये एक जनरल रिजल्ट भी है, लेकिन जाहिर है वो यहाँ से हमने डिराइव भी किया है. So I hope you can understand this working yourself. और कोई माइनर कोई एरर है तो उसको भी तुम रिमूव कर सकते हो. इसका डेरिवेटिव जब निकाला गया तो वो नेगेटिव आया और उस नेगेटिव को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, आई होप यू कैन डू दैट. A very simple looking problem कि tangent x की वैल्यू जो है वो x से बड़ी होती है. Graphically, you may have seen this, and now this question is restricted from 0 to pi by 2 because tangent x becomes very large close to pi by 2, and the working is not very difficult. I hope you can understand it yourself. अरे ये पेज दोबारा आ गया था जो मैं बना रहा था ये फाइल, तो ये 2 दफा आ गया था. Some problems are repeated. This is one important and complicated question. इसको तुम लोग एक्सप्लोर करो. अगर तुम्हारे काबू में नहीं आया तो फिर देखेंगे. बहुत लंबे स्टेप्स आ रहे हैं इसके अंदर.
but it is established. With the discussion on function increasing and decreasing, some of the problems that we have considered, we are now in a stage that we can move forward to theorems that involves continuity and derivability over an interval for any given function, and we have interesting results. तुमने रोज थ्योरम का नाम सुना होगा, तुमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का नाम सुना होगा, सुने जी भैया? सर। हाँ, ये सारी जो है मैंने रिव्यू कैलकुलस में जो है मेंशन की हुई हैं. लैग्रांज थ्योरम, सॉरी, रोज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, Cauchy mean value theorem, they build up material for generalized mean value theorem, or ultimately they lead us to Taylor's expansion and Maclaurin's expansion ultimately. इन सब में जो फंडामेंटल थ्योरम है ये डार्बू थ्योरम है. डार्बू थ्योरम जो है इसका प्रूफ जो है वो हम तफसील से स्टडी करना चाहेंगे, लेकिन मैं इस प्रूफ को आज मौखर कर रहा हूँ. वी हैव कंज्यूम अराउंड 40 मिनट्स, तो मैं अपने फ़र्ज तो अदा कर दिया है, नफिल अदा हो ना हो लेकिन फ़र्ज अदा हो गया है. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स डार्बू थ्योरम है, ये मैंने शेयर नहीं की. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव है, इसके बाद फिर रोज थ्योरम आता है, एंड वी सी दैट हाउ दीज रिजल्ट्स आर बिल्ड अप. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड पता नहीं मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, हाँ कर दी थी. सो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर, एंड मैं एक नया असाइनमेंट बना रहा हूँ. होपफुली आप लोग लास्ट असाइनमेंट जो है वीकेंड तक, कब तक का टाइम दिया हुआ मैंने, जब तक का भी दिया हुआ है, उससे पहले मैं अगला, हाँ उससे पहले इंशाल्लाह एक असाइनमेंट और दे दूंगा. असाइनमेंट क्या, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. सो दैट्स इट.